Today we will start chapter 6, ratio and proportion. Ratio and proportion from s.chand for class 10th for ICSE. Yes, what do you mean by ratio? Aradhya, what is the meaning of ratio? सर जब अपॉन में होता है जो अपॉन में होता है नो समृद्धि Yes, sir. what is the meaning of ratio? I don't know. Anyone else? Parush, Anika? So can I? Comparison of two similar quantities. Two? Similar quantities. No. Ratio मतलब comparison. So मैंने वही बोला था comparison of two similar quantities. Comparison तो मुझे सुना ही नहीं दिया. माइक ऑन नहीं होगा. कोई बात नहीं. Proportion when two or more ratios are equal. Two or more ratios are equal. That is called proportion. Understood? Comparison and when two or more ratios are equal, that is called proportion. अब proportions की type बेटा. एक मिनट पहले. Kiri. Yes, Jamie. Doing the same thing. He's revising what he did last week. Adanam Chayan. Jamie. No, not right. Jamie, mic off कीजिए बेटा. I think so. का माइक नहीं चल रहा. हाँ जी जी. Comparison two or more ratios are equal. That is called proportion. अब यहाँ रेशो का तो कुछ दिया ही नहीं इस बुक में. सीधा proportion शुरू कर दिया. कोई बात नहीं. अब इसमें आए थे बच्चे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. सबसे पहले चलो मैं जैसे 4 रेशियोज लिखी मैंने. 2 रेशियो 4. This is the symbol of proportion. When two ratio symbols are joined together, that is called proportion. 2:4 proportion to 8:16. इस टाइप से जो ये वाली टर्म्स है जो मैंने सर्कल कर दी, these are called. बच्चे एक सेकंड बच्चे ना. Two or more ratios are equal. For example, 2:4 proportion to 8:16. These two terms, extremes. These two terms are called extremes. And these two terms are called means. These two terms are called means.
तो यहाँ पे वन फॉर्मूला इज देयर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is always equal to product of means. Means के product के equal होगा. This 16 twos are 32. This is the product of extremes. 8 fours are 32. If this is not equal, मतलब if the product of extreme is not equal to the product of means, then it is not in proportion. So ratios are not in proportion. Means समझ गए बच्चे? अल्फीशा? Yes, sir. Now, the first exercise है that is so easy. इसमें कुछ नहीं है. Exercise 6A. Yes, मौली, आपको कौन सा बुक लगा हुआ है बच्चे? s.chand है। s.chand है। और आपको बच्चे कौन है? भागीरथ? क्या नाम था आपका? बच्चे कल से आपने अपने नाम से ज्वाइन करना है, आज नंबर से ज्वाइन किया है ना? माइक ऑन है बच्चे आप? हेलो, बच्चे नेम क्या है आपका? जो आज न्यू स्टूडेंट है दूसरा मौली के बिना, उसका नेम क्या है बच्चे आपका? यू आर नॉट ऑडिबल. चलो कोई बात. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. देखो प्रपोर्शन इज ऑलरेडी गिवन, तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो मौली से ही पूछते हैं आज. मौली, 8:14 proportion to x/28. We have to find the value of x. Exercise 6A. First sum, first part. 8:14 proportion to x/28. How we can find x? Sir, we will write in ratio 8/14 equals to x by 28. This is also correct. 8/14 is equal to x by 28. One more method is there. Yes, sir. We know that. ऐसे कर लोगे तो भी ठीक है. That is correct, not wrong. But ज्यादा better ये है. We know that product of extremes, ऐसे proper line लिख के, is equal to product of means. Product of extreme 8 into 28 is equal to product of means 14 into x. Now 8 into 28, 14 going downwards is equal to x. 14 twos are 8 twos are 16. That is the value of x. That is the answer. Understood? Yes, sir. किसी को डाउट बेटा इसमें कोई? No one? No, sir. Now, first some, second and third part you can do it easily. हो जाएंगे? बोलिए बेटा. You Yes, can do sir. it. Yes, sir. Find the fourth proportional to. Fourth proportional. अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. जब उन्होंने फोर्थ proportional बोला है, find the fourth proportional, then three ratios are given. Three ratios आपको already given हो. जैसे मान लो फर्स्ट पार्टी है इसका 25, 15, 40. जब उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला फोर्थ प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे? लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स. फोर्थ पोजीशन पे लिख देंगे.
रेशो का सिंबल डाल देंगे 15, प्रपोर्शन का सिंबल डालेंगे 40, रेशो x, सेम एज लाइक फर्स्ट सम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 25x is equal to 15 into 40, and x become 15 into 40 upon 25. 8 5s are 5 5s are 5 3s are 8 3s are 24 is our answer. This is our answer. This is the fourth proportion. One more thing, if they ask to find the third proportion and three values are given, suppose 25 15 and 40, again three terms are given, at that time let third proportion be x, then we have to write down as like this, x ratio 40. But in case of third proportion, only two terms are given, when only two terms are given. If they ask to find the third proportion between this and this, suppose they ask 25 and 15, sorry comma डाला होगा, find the third proportion between 25 and 15, at that time we have to write down the second term two times, twice, 25 ratio 15 proportion to 15 ratio x, और फोर्थ पोजीशन पे ही फाइंड करना है हमने थर्ड प्रोपोर्शन, लिखा उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन है, दोनों केसेस बता दिए. अगर उन्होंने थ्री टर्म्स गिवन है एंड दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड पोजीशन पे x हमने लेट कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड. बट in case only two terms are given as like this one, 25 and 15, find the third proportion between 25 and 15, let third proportion be x, then what we have to write down, 25 ratio 15, जो second term है you have to write down twice, ratio x, last position पे x लिखना है, थर्ड पे नहीं लिखना, लास्ट पे लिखना है. समझ गए बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 25x is equal to 15 into 15 as like this one, and x become 15 into 15 upon 25, 5 3s are 5, 5 3s are 9 is our answer and in that case. Understood? कोई डाउट बेटा इसमें थर्ड प्रोपोर्शन में? नो सर. नो वन. बाकियों को सुनाई दे रहा है कि सो रहे हैं सारे? Yes, sir. सो Yes, रहे हो? sir. Yes, sir. No, सो sir. रहे हो? मैंने बोला सो रहे हो, या तो कहते यस सर. No, sir. नो सर. ओके No, sir. चलो. नाउ सेकंड सम. नो बच्चे, दिस इज द, बच्चे आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही? आप बोल दो ना, टेक्स्ट मैसेज क्यों कर रहे हो? Here, this is a s.chand book. Second sum, third part. Find the fourth proportion between this and this and this. तो ये मुझे यशिका करवाएगी. ठीक है यशिका? Yes, sir. a square minus 5a plus 6, a square plus a minus 6, and a square minus 9. We have to find the fourth proportion between these three terms. Yes, Shika, what I have to write down? Sir, let the fourth proportion be a square. Let fourth proportion be x, not a square. Okay? Yashika. Yes, sir. Now, what I have to write down? Sir, A a square minus pa plus 6. Ratio symbol. A square A square plus plus a minus 6. Proportional symbol.
A square a square minus minus 9 ratio ratio x. Now, product of extremes is equal to product of means. ठीक है? This into this. A square minus 5a plus 6 into x is equal to this into this. A square plus a minus 6 into a square minus 9. Now what I have to write down? क्या करें हम? बताइए बच्चे. and multiply. मल्टीप्लाई करके तो एक्स फाइंड नहीं होगा यशिका. सर a square minus 5a plus 6 को divide is equal to के RHS साइड भेज देंगे. फिर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करो यशिका, इसकी फैक्टराइजेशन, इसको भी और इसको. मिडिल टर्म स्प्लिट. 6 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 5 आए. क्या फैक्टर्स होंगे? क्या क्या? सर 6 और 1. 6 and 1. तुझे मिडिल टर्म आती है यशिका? सर 2 यशिका, and 3. मैंने क्या पूछा है पहले, मुझे उसका आंसर दो. आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आती है? यस सर. फिर आप पहले 6 और 1 क्यों बोल रहे थे? सर गलती से बोल. ये सिंबल देखो, आपको इतने अच्छे वे से समझाया हुआ है कि लास्ट में प्लस है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस. अगर 6 और 1 लेंगे तो उनका सम 7 बनेगा, 5 नहीं बनेगा. 3 and 2 minus 3a minus 2a plus 6 into x is equal to इसके फैक्टर्स. 6 के फैक्टर्स जिनको माइनस करे 1 आए, अगेन 3 and 2. okay, a square plus 3a minus 2a minus 6, and here a square minus 3 square. What is common between first two? सर a. What is left? सर a minus 3. Now minus 2, a minus 3 in square bracket and x. Here a is common, a plus 3, minus 2 is common, a plus 3. Here a square minus b square, a plus 3 into a minus 3. A minus 3 into a minus 2. A minus 3 common आ गया. What is left? A minus 2 into x is equal to a plus 3 into a minus 2. Here a plus 3 and a minus 3 as like. Now we have to find x. This two terms going downwards. A plus 3, a minus 2, a plus 3, a minus 3 upon this one. A minus 3 into a minus 2. A minus 2 is cancelled, a minus 3 is cancelled. A plus 3, a plus 3. We have to multiply these two terms, or we have to write down a plus 3 whole square. That is the same thing. इन्होंने I think so multiply करके लिखा हुआ है. आंसर नहीं, सॉरी, आंसर में क्या लिखा? हाँ, ये लिखा है सेम. दिस आंसर. बच्चे इस सम में किसी को डाउट हो? एनीवन? No sir. No, sir. श्योर? Yes, sir. जस्ट वेट. जो नेक्स्ट सम है बच्चे, श्रेया भाई. हेलो, डेल से किसने ज्वाइन किया है? Who has joined from the Dell? बोलो बच्चे. New student, I think so. Find the third proportion to 16 and 36. So this one, just wait. Vishesh, we have to find the third proportion to 16 and 36.
They sent their word to FIFA and they stepped back and would not play. They chose to play in the Olympics, and that was the Porosh, mic off karo. biggest. Porosh. Yes. Tell me. Vishesh, Yes, sir. बताइए how we can find the third proportion. First of all, I have to write down let third proportion be x. Now, what I have to write down? Tell me fast. 16 is to 36 is proportion to 36 is to x. Yes, very good. In case when two terms are given and we have to find the third proportion, at that time we have to write down these two terms 36 twice. Then at the last position x. Product of extremes is equal to product of means. 16 into x is equal to 36 into 36. X we have to find 36 into 36 upon 16. 9 4s are 4, 4 9s are. X become 9 9s are 81. So therefore third proportion is 81. Yes, समृद्धि. Yes, sir. Second and third part हो जाएंगे कि करवाऊं बता मैं. Yes, sir. Anyone else? किसी को डाउट हो कि नहीं हो पाएंगे तो मैं करवा देता हूँ बेटा. बोलिए. No one? No, sir. No, sir. हो जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Try करना. Otherwise I will be there. Now, when they ask to find the mean proportion between any two terms. Between any two terms. Suppose first part ये जैसे fourth का 5 and 80. We have to find a third proportion. Oh, sorry, mean proportion. Let mean proportion be x. Then you have to write down x twice. 5 ratio x proportion to x ratio 80. In mean terms, these are the means now. इन दोनों terms में मैंने x लिख दिया. Product of extreme is equal to product of mean. X square 5 into 80. And x become square root of 5 into 80. 85 is a 120. Square root में से बाहर आ जाएगा 20. तो this is the mean proportion. Mean proportion जब भी find करना है तो middle वाली two terms को हम x let कर लेंगे. Understood? Now इसका बच्चे मुझे third part करवा दें. उसका third part. हाँ. सर वहाँ प्लस माइनस का रूट होगा ना सर? रेशियो में कभी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं आएगी टा. सर कभी नहीं ना. ओके सर. एक तो प्रोपोर्शन में होगा ही नहीं बेटा. यस सर. ठीक है. थैंक यू सर. थर्ड पार्ट x minus y and x cube minus x square y. Yes, Samriddhi. Samriddhi. Yes, yes. Sir, Yes. x square Let- y Let mean proportion be x. yes. बच्चे x is already there ना. Samriddhi. Yes, sir. Then अगर हम x let कर लेंगे तो that is wrong. Let mean proportion be A. Now x minus y ratio A yes is proportion proportional to a A ratio. x cube minus x square y. Product of means a square. Product of extreme x minus y into this X cube minus x square y. a square x minus y. What is common between these two? X square. What is left? X minus y. Now a become x minus y into x minus y. I have to write down x minus y whole square Yes. into x square. What is out now? Square root में से क्या बाहर आएगा?
x minus y और x into x into x. को Yes. मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या आएगा? x minus xy. वेरी गुड, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर। ओके, समझ गए Yes. बच्चे? Yes, sir. नाउ Sir, continued proportion. Next topic is continued proportion. Continued proportion क्या होता है? Continued proportion होता है जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि 3, 4 and x are in continued proportion. Then 3 by 4 is equal to 4 by x. अगर यहाँ पे चलो y भी लिखा होता, this and this are in proportion, then x upon y. z भी लिखा होता is equal to y upon z. 3 upon 4, 4 upon x upon y, y upon. This is called continued proportion. Understood? This is called continued proportion. समझ गए बच्चे? पौरुष, Yes, sir. इवनिंग का टाइम सेट नहीं आ रहा तेरा? No, sir. क्योंकि ना मेरी 9 o'clock 12th की क्लास है। सर मैं तो वीक में सिर्फ 3 days मेरा फ्री रहता है सर। चलो सर 3 days फिर तू वीडियोस देख लेना, ठीक है? सर मतलब 4 दिन क्लासेस रहती हैं और उसके बाद 3 days फ्री रहता है, जैसे कि सर ट्यूसडे रहेगा और वेंसडे और संडे सर। sir, मेरी भी होगी 3 days आपसे. इवनिंग वाली Yes sir, 7 to 8 मेरी दूसरी क्लासेस है. कोई बात नहीं, तब मुझे बता दो, उस दिन मैं देख लूंगा, चाहे या तो टाइम चेंज करूंगा। Sir, Monday, Wednesday and Friday, alternate days. मंडे फ्राइडे एंड Wednesday. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और पौरुष आपकी? ट्यूसडे वेंसडे एंड संडे में फ्री रहता हूँ, बाकी सारे दिन करता हूँ। ऐसे तो नहीं सेट आएगा, फिर आप वीडियोस ही देखना बेटा, ठीक है? Yes, कोई sir. डाउट हुआ तो मुझसे पूछ। यस, फिफ्थ सम, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। पौरुष, Yes, x, 16, 48 and y are in continued proportion. Continued proportion में we have to find x and y. okay, sir. How we can find? So x upon 16 is equals to 16 upon 48 is equals to 48 upon y. Is equals to 48 upon y. Yes, these इन दोनों टर्म्स को इक्वल कर दो तो Yes, x की sir. वैल्यू आ जाएगी, Yes, sir. इन दोनों को इक्वल कर दो तो y की आ जाएगी। x upon 16 is equal to 16 upon 48. 16 3s are 48, 1 by 3 and x become 16 by 3. 16.3. Same, 16 upon 48 is equal to 48 upon y, 1 upon 3, y become upwards 48 into 3. 3. 144. 8 3s are 24, 2, 12 to 4, 144. That is the answer. Now, इसका second part, Neve. Yes, Question sir. number 5, second part. X, 9, y and 16 are in continued proportion. Then find x and y. Yes, Neve. What I have to write down? Neve, बोलते होते हैं बेटा, नहीं बोलना। चलो, Molly, Yes, sir. how we can find x and y? Sir, we will write x by 9 equals to 9 by y equals to y by 16. Very good. Now, सर इसमें तो 2 वेरिएबल हैं तो first of all, these two are equal. 9 into 16 is equal to y square, na?
Yes, sir. So y become square root of 9 into 16. 3 into 4. Y become 12. That is 12. our answer. Now, x upon 9 is equal to 9 upon y. In 12. place of y, you have to write down x upon 9, 9 upon 12. 3 Yes, 3s sir. are 4s are. And x become 9 3s are 27 by 4. That is our answer. Understood? Yes, sir. नीव जी बोलना होता है, ठीक है? नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे बोल दो कि नहीं आ रहा. Okay, नीव. sir. Sixth sum. Love Sony. Question number 6. What number must be added to 3, 5, 7, 10 each in order to get 4 numbers in proportion? कौन सा नंबर हम इनमें ऐड करें कि हमें 4 चारों नंबर है प्रोपोर्शन में हो जाए? तो यस, टेल मी लव सोनी. Let number added be x. Three, 5, 7, 10. Let number added be x. 3 plus x proportion to 5 plus x. Proportion to 7 plus x. Ratio 10 plus x. Is it okay, love? Yes, sir. क्यों उन्होंने यही बोला है ना, which number must be added to each term? Yes, sir. So that they are in proportion. We have add x in each term. 3 plus x, 5 plus x, 7 plus x, 10 plus x. Product of extremes is equal to product of means. 3 plus x into 10 plus x is equal to 5 plus x into 7 plus x. This into this, 30 plus 3x plus 10x plus x square. Here same 35 plus 5x plus 7x plus x square. x square को इस साइड लेके जाएंगे, कट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. मैंने ऐसी कट कर दिया. 13x 12x 10 plus 3x plus 10x 13x minus 12x is equal to 35. 30 become minus on that side. X 13x minus 12x x. 35 minus 30 5. So 5 must be added to each term. This is our answer. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now जो 7 सम है सेम है इस टाइप का, इसमें एडिड था, इसमें सब्ट्रैक्ट है. Let number subtracted from each term be x. 28 minus x ratio 53 minus x proportion to 19 minus x ratio 35 minus x. We can find x now. 8th sum. Find two numbers. Jamie, Yes, sir. find two numbers such that the mean proportion between them is 14 and the third proportion to them is 112. Mean proportion 14 होना चाहिए और third proportion 112 होना चाहिए. Sir, we'll take mean as x, sir. No, numbers. two numbers, not mean. Let two numbers be x and y or a and b. Okay. Okay, yes, sir. Question number 8, first part. Mean proportion is given 14 and third proportion is given 112. Let two numbers be x and y. Now, how we can find x and y? Jamie. So 14 is proportion to
No, no numbers are these and this, and 14 is the mean proportion. Then X ratio 14 14 proportion to to 14. ratio Y. Understood? Oh, then how about okay, yes, sir. Here, what is this? XY is equal to, Is equal to 14 into 14. now, third proportion. Between this and this is 112. How you, 100, what I have to write down? X proportion Ratio. Y Y, proportion 112. no. In Y case of third, yes. proportion 112. In case of third proportion, we have to write down the second term twice. Second, yes, sir. From here, 112x is equal to y squared now. Y square, yes, sir. Here, you can find x from here or y from x from here and put in second equation. Okay. From here, x become 14 into 14 upon y now. Y, yes. Yes, sir. Put it here. इसको first equation ले लेना, इसको second. From first, put the value of x in second. 112 into, in place of x, you have to write down 14 into 14 by Y. yes is equal to y squared. Yes, sir. Y with y cube. Y cube, yes, sir. 112 into 14 into 112 को क्या लिख सकते हैं हम? sir 14 into 14 into 8. 4. Oh, why we have to write down? Because cube become cube root on this side. yes, sir. Yes, sir. 8 का cube root 8, 8, 8. 8, 8 are Eight. 64, 64. This is not cube, Jamie. This is cube root. Yes, sir. Yes, sir. Only 2. 2. Yes, 2, sir. 2, 2. And 2 in into 14. 14. Yes, sir. Y. 14 to the 28 is 14 the to value of y. 28. Yes, sir. Understood? Yes, sir. Anyone having doubt? किसी को doubt हो बेटा? No? इसका second part you have to write down yourself. You can do it yourself. Find two numbers such that the mean proportion between them is 18 and the third proportion between them is 140. Same as like first part. Ninth sum, P plus R is 2Q and 1 upon Q plus 1 upon S is 2 upon R. Then prove that P ratio Q is equal to R ratio S. Yes, Annika. Yes, sir. Question number 9. P plus R is given 2Q and 1 upon Q plus 1 upon S is given 2 upon R. How we can do this? And we have to prove, जो proof करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P upon Q is equal to R upon S. Ratio में था, मैंने upon में लिख दिया. How we can do it? सर हम वैल्यू बच्चे? निकालेंगे जैसे P की वैल्यू इन रिस्पेक्ट. बच्चे, अनिका थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना. मुझे एक बात बताओ, जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें कौन सी टर्म नहीं आ रही? सारी आ रही है ना? यस. तो क्या करें हम? What we can do? सर इक्वल नहीं कर P को निकाल नहीं सकते. P कैसे इक्वल टू 2Q माइनस R. देखो बच्चे, इसमें P नहीं है. क्या है? नहीं तो फिर क्या करें? सर इसमें से हम
सॉल्व करके क्यू और एस की वैल्यू और आर की वैल्यू निकाल असल में वो करेगा तो ब्लेजर आपको नहीं पता, ब्लेजर आपको नहीं से बताऊंगा। अब ब्लेजर वाले फोटो तो स्प्रिक नो बेटा, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು So and yes Parish, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ हम p की वैल्यू 2q माइनस आर ले ले और 2/r के माइनस 1/q करे तो मे भी हो सकता है 2q माइनस आर आ जाए तो p की वैल्यू उसमें फिल कर सकते हैं। सॉरी कैसे पॉरिश? यहाँ से p की वैल्यू 2q माइनस r, और यस यहाँ तो p है ही नहीं ना। तो 1/s इज इक्वल्स टू 2/r माइनस 1/q करके। s की वैल्यू निकाले, इसमें s नहीं है। नहीं सर, इसकी वैल्यू जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो मे भी हो सकता है कि p इज इक्वल्स टू 2q माइनस आर यहाँ पे बनेगा, तो हम p की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ऊपर मेरे ख्याल से सर आर क्यूब किसमें होता है। सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा? p तो है ही नहीं हमारे पास, इसमें नहीं है ना p, हाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट? सर बताइए। हाँ जी। फर्स्ट इक्वेशन में सर मे बी आर की वैल्यू फाइंड कर लें एंड सेकेंड में सर एस की वैल्यू, फिर वहां पे सर पुट कर दें अच्छा फिर सर, फिर वो इक्वल हो जाएगा सर मे बी। देखो ये दिया है ना, यहाँ पे एलसीएम लो, क्यू एस, एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 2/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r इंटू एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 2qs। नाउ व्हाट वी कैन डू? बताइए, बोलिए पौरुष। सर जो जिस मेथड से मैं बता रहा था सर उससे हो जाएगा। वो तो सबसे ही जाएगा। यस सर। यहाँ से r की वैल्यू निकाल के फिल कर दें, यस सर। या किसी और की वैल्यू फिल कर दें, बताओ। क्यू की वैल्यू फिल कर देते है ना? यस सर, उससे कर लीजिए सर, वो ज्यादा आसान है क्या? सर, जो मेथड मैं बता रहा था। और यार ये क्या है? सर इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सर, वो डायरेक्ट ही हो ये रहा है। क्या चीज है? सर 2q। कोई बात नहीं, तेरे मेथड से ही मैं करता हूँ अभी। 2q, व्हाट इज दिस? सर 2q। तो इन प्लेस ऑफ 2q you have to write down p plus r यस सर। into s, cross sorry multiply rs plus qr ps plus rs, rs is cancel, what do you यस get? qr is equal to p ps। अब हमें क्या चाहिए? p के नीचे q चाहिए, p अपने प्लेस पे, q कहाँ चला जाएगा नीचे, r अपने प्लेस पे, s कहाँ चला जाएगा नीचे, और यही हमने प्रूव करना है। यस सर। हाँ अब तू अपना मेथड बता। कोई बात नहीं, 1/q 1/s is 2/r। यस सर। Yes, tell me। सर p इज इक्वल्स टू 2q माइनस आर। चलो कर दिया। अब सर इसमें अब हम लिखेंगे 1/s इज इक्वल्स टू 2/r माइनस 1/q। अब सो अब हम इस साइड को आर आर क्यू सा एज एलसीएम लेंगे। 1/s इज इक्वल्स टू 2q माइनस आर अपॉन आर क्यूब। नाउ सब बस p की वैल्यू फिल कर देंगे और बस। तो एक ही बात है ये, और इसमें क्या डिफरेंस है फिर? सब बट वाला इजी तू इधर जाता है। लेके, नहीं नहीं, तू इधर लेके करके गया है, मैंने यहाँ सीधा से ये फिल कर दिया। यस सर। दैट इज द सेम थिंग, ओके। यस सर। नाउ नेक्स्ट सम, टेंथ। If B is the mean proportional between A and C, prove that A square plus B square plus C square are in proportion. B is the mean proportion between A and C. Yes, Alfisha. 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 वॉइस नहीं आ रही आपकी अल्फिशा। लेट ಮಾಡ್ತಿರೋ B is the mean proportion
between A and C, prove that A, C, A square plus B square and B square plus C square are in proportion. B is the mean proportion between A and C, na? Yes, Then sir. what? Yes. Then what I have to write down? 20 ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ न्यू स्टूडेंट बच्चे नाम क्या है? भाग ಹಾ ಹೌದು माइक ऑफ कर लीजिए बेटा. ಅದು ಬೇಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರು ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಹೋಗಿ 20 to 25 minutes ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ A ratio B proportion to B ratio C. B is the mean proportion between A and C. So this means this is given now. Yes, sir. Now what I have to write down? Sir, A into C is equals to B into B. B square is equal to AC आ जाएगा. Yes, sir. अब जो प्रूव करना है हमें, that is AC A square plus B square and B square plus C square are in proportion. We have to write down this. What we can do? A upon means we can say A upon C. We have to prove A square plus B square upon B square plus C square. Understood? Alfisha? Yes, sir. इन चारों टर्म्स को हमने प्रोपोर्शन में करना हो तो दैट मीन्स दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस ना. Yes, sir. इसके राइट हैंड साइड उठा लो. ओके. A square plus B square upon B square plus C square. In place of B square, you have to fill the value AC. AC. A square plus A square plus B square upon AC plus C square. तो ऊपर भी तो 20 ऊपर नहीं Yes, फिल करना है AC. AC plus C square. Now what I can do? Alfisha, now how what I can do? Sir, from above taking A common and from below we're taking C common. Very good. A upon C. Yes, sir. Okay. This is thing is equal to LHS. हो गया. 11th sum, you have to do it yourself. Simple enough. X plus 7 is the mean proportion between this and this. X plus 3 and X plus 12 के बीच में X plus 7 mean proportion है. X की value find करनी है. This is equal to this. Prove that A upon B is equal to C upon B. Simple enough. 12th sum मुझे आराध्या करवाई. आराध्या. Yes, sir. A square plus C square upon AB plus CD is equal to AB plus CD upon B square plus D square. What we have to prove? A upon B is equal to C upon D. This one we have to prove. What I can do? Yes, Aradhya. Sir, cross multiplication. Yes. A square को दोनों से करो. क्या आएगा? Sir, A square B square Plus A square D square plus C square B square plus C square D square. Sir, A. थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ. ठीक है मैं. देखो AB प्लस CD AB प्लस CD जब क्रॉस करेंगे तो AB प्लस CD का होल स्क्वायर हो जाएगा ना. A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB. ओके. Yes or no? Yes, sir. A square D square plus C square B square plus C square D square. Here what we get? A square B square plus C square D square plus 2ABCD. This one is cancelled. C square D square. This one is also cancelled. Can I write it as AD square plus CB D square?
This become minus on this side. Now, what is this? Radhya, Sir, AD plus CB, sorry sir, AD minus CB का whole square. very good. BC और CB, that is the same thing. CB और BC is the same thing ना? देखो A square B square minus 2AB. वो आगे पीछे कर देंगे तो वही चीज. Yes sir. Square becomes square root on that side. AD minus BC is equal to 0. Square root of 0 is 0. AD is equal to BC. BC. A, B become downwards. C अपने प्लेस पे है. D कहाँ चला गया नीचे. यही हमने प्रूव करना था. आगे समझ. Yes sir. यस सर. चलो ये एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट करना. इवनिंग में हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे. ओके. ओके सर. चलो. ओके टाटा बाय बाय. सी यू इन द इवनिंग. बाय सर. बाय बेटा.